Bismillahirrahmanirrahim. Good morning, everyone, dear students. The topic would be further human resource. That would be the chapter number 13 for A2. And the topic that we are going to learn is measuring employee performance by the HR department. Further human resource, chapter number 13. The topic number 2 is measuring and monitoring employee performance. So it is the HR department responsibility to calculate, evaluate, measure the employee performance using different methods. The consequence of poor workforce. Why the HR department calculate the performance, measures the employee performance? Because the consequence of poor performance of employees can be very damaging, bad for the business prospects. So HR department use the number of different indicators to measure the staff performance. The formal indicators that included in your syllabus is calculating the labor productivity, how productive the employees are, the rate of absenteeism, and the labor turnover. Three methods included in your syllabus, and I also give the examples of some other methods which are created according to the firm and according to the industry. The first method of calculating the employee performance, the first method of calculating the employee performance is the labor productivity. How productivity would be calculated? What is meant by the labor productivity? The labor productivity means the output against the input, how productive the number of employees are. For example, number of, you have four employees. The first employee produces 10 items, the second one would be 11, the third would be 13, the fourth 12. The total number of products produced is 44 divided by 4. So the average productivity calculated by HR department would be 11. So 11 would be the average productivity. So the productivity is the most important. सबसे ज़रूरी जो एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस का जो टेस्ट है वो प्रोडक्टिव, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, द की टेस्ट लिखा गया है इसको एम्प्लॉय परफॉर्मेंस को कैलकुलेट करने के लिए. So if the productivity increases with the period of time, then it is a good indicator of staff performance. But if the productivity, जैसे कि example दी गई 11, इसको ये reduce हो रही है, on average reduce हो रही है, that it is a bad indicator of employee performance. That productivity also affects on the wage rate, the labor cost, the average cost of producing the product as well. So the labor productivity is the most important. सबसे important measure जो HR department use करेगा, that would be labor productivity. Employee की performance को measure करने के लिए. The second method that could be used by the HR department to evaluate the employee performance is the rate of absenteeism, the rate of proportion of the total workforce who is absent over a particular time period. ये particular time period कितनी duration का होगा? Obviously, it's it's on daily basis. Absenteeism daily basis पे calculate होगा. For example, आज 100 employees में से 10 employees जो हैं वो absent हैं. So आज का जो absenteeism rate होगा वो 10%. That would be 10%. So इसी तरह daily calculate होगा. At the end of the month, all of the averages percentages are added. जितने भी नंबर ऑफ वर्किंग डेज है, लाइक फॉर एग्जांपल अगर आप संडेज को एक्सक्लूड कर दें तो 22 या 23 वर्किंग डेज हैं, जितनी भी परसेंटेजेस हैं उन सबको ऐड किया. फॉर एग्जांपल 500 आपके पास आंसर आया, इसको नंबर ऑफ वर्किंग डेज 22 पे डिवाइड करना, देन वी कैलकुलेट द एवरेज प्रोडक्टिविटी, एवरेज एब्सेंटिज्म रेट, जो कि फॉर एग्जांपल 21 या 22% एब्सेंटिज्म रेट है. दैट ऑल्सो वर्कड आउट फॉर अ होल ईयर.
सच एज आपके पास एक जनवरी का एक रेट है, फैब का, मार्च का, अप्रैल का. सो एट द एंड ऑफ द ईयर एड अप ऑल ऑफ द एवरेजेस एट द टाइम, और उसको नंबर ऑफ मंथ्स लाइक 12 पे आप डिवाइड करेंगे तो नम ईयरली यू वुड बी एबल टू कैलकुलेट द ईयरली एब्सेंटिज्म रेट. How we evaluate whether the absenteeism rate is good or bad. So the method is to compare the absenteeism rate with the base year. लास्ट ईयर से आप इसको कंपेयर करेंगे, अगर तो ये रिजल्ट इंक्रीज कर रहा है दैट वुड बी द बैड इंडिकेटर, और अगर ये जो रिजल्ट है लास्ट ईयर से डिक्रीज कर रहा, then it is a good indicator of staff comfort and the level of motivation. Especially it is as said by the disruptive for some customer services, because you have to hire extra staff for serving the customers. You have to manage the illness of key staff. Staff absenteeism is not good for this production sector as well as the service sector, especially for the service sector लिखा गया. उसमें आप कस्टमर को सर्व करें. इफ द बैंकिंग स्टाफ इज एब्सेंट, सो नो वन इज देयर टू काउंट द मनी, टू डील विद द deal with the utility bills and to deal with the customers. So that would be disruptive for service sector business. The third method is the labor turnover. The number of staff leaving in 1 year due to certain reasons. लेबर टर्नओवर, क्या ये वो एम्प्लॉयज़ हैं जो डिसमिस किए गए हैं, रिडेंडेंट किए गए हैं, या ये वो एम्प्लॉयज़ हैं जो आपको आपकी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के चले गए. दीज आर द पीपल एक्चुअली हु लीव्स with the certain reasons. You can calculate the turnover by नंबर ऑफ स्टाफ लिविंग इन 1 year डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टाफ. ये ईयरली होगा. जैसे एब्सेंटिज्म रेट आपने डेली बेसिस पे कैलकुलेट किया, लेबर टर्नओवर ईयरली होगा. फॉर एग्जांपल अगर आपके पास नंबर ऑफ स्टाफ इस साल 15 जो हैं वो आपको लीव कर गए, एंड यू हैव 200 नंबर ऑफ स्टाफ एट द एंड ऑफ द ईयर. नॉर्मली एवरेज कैलकुलेट की जाती है, तो 15 डिवाइडेड बाय अगर आप 200 करते हैं तो ये 7.5 आपका लेबर टर्नओवर कैलकुलेट किया गया. दैट इट इज आल्सो कंपेयर्ड विद द बेस ईयर, and if the result is increasing, that is not a good indicator. That is the indicator of demotivation, of low morale and the discomfort, discontent of them. But if the result is increasing, if the result is decreasing over time, then it is a good indicator. अगर result बढ़ रहा है, then it is not a good. लेकिन अगर result पिछले base year से reduce हो रहा है, then it would be a good indicator. लेबर टर्नओवर रीजंस भी कुछ मेंशंस की गई हैं, जो नॉट टू just because of lack of financial rewards, the working conditions are not good, not giving the respect, managers are not giving the respects to their employees due to the recruitment policy में कुछ लिखा था, बाद में terms and conditions को पूरा नहीं किया गया. These are the reasons. Behavior of the culture of the organization also would be the reasons of staff turnover is not good. Staff turnover, high staff turnover is not good for the business because it lead to hiring new employees. Again, you have to start the process of recruitment and selection, procedures where you writing the job description, job specifications, taking the interviews, selecting the best ones. So huge, a prolonged procedure of hiring new employees along with providing the training and development. Again, you have to mention the MBO, giving the induction training to that worker, doing on the job and off the job training would be provided by the HR department. So staff turnover, high labor turnover is not good. And the last cost, that is that is very difficult to establish the familiarity and loyalty and the team spirit. um, Up to some extent, labor turnover would be the benefit. The employees who are not performing well, they might be leaving, so it could be the benefit. So, and if the new workers are from your competitors with like a certain brands, you
hired from a trained employee, an experienced employee would be hired, then that employee has certain type of ideas, practices, expertise. Like in hotel industry, अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन किसी होटल के एक्सपर्ट एक्सपीरियंस शेफ को हायर करते हैं, देन वो बहुत सारी नई रेसिपीज के साथ आपके पास आ सकते हैं. So these three methods are the part of your syllabus. Labor productivity, the most important factor, the absenteeism rate, and the third one is labor turnover. Now, this is the time to design our own method. It is possible for HR department to establish, design its own method according to the industry, according to the type of the industry, according to the product offered, according to the size of the firm, nature of the product, nature of the labor, such as labor based or capital based. सो कुछ मैंने अपने से ऐड किए जो कि एक जस्ट एग्जाम्पल के तौर पे स्टूडेंट्स इनको पढ़ सकते हैं और एग्जाम में इनको एग्जाम्पल के तौर पर लिखा जाए. फॉर एग्जाम्पल द वेस्टेजेस लेवल, द नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस्ड एंड वेस्टेड बाय ईच एम्प्लॉय, नंबर ऑफ पेशेंट्स रिकवर विद द ट्रीटमेंट ऑफ ईच डॉक्टर इन मेडिकल साइंस. हॉस्पिटल में जितने नंबर ऑफ वर्कर्स ट्रीट किए जाएंगे उनमें से जितने रिकवर होंगे वो एम्प्लॉय की एक डॉक्टर की परफॉर्मेंस मेजर में आएगा. जितने नंबर ऑफ पेशेंट्स की डेथ हो जाएगी वो उसकी परफॉर्मेंस मेजर में एक बैड इंडिकेटर के तौर पे यूज़ होगा. नंबर ऑफ कस्टमर्स सर्व बाय डिफरेंट पीपल एंड द क्वालिटी इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट. The quality is the most important indicator of employee. If the workers are not up to the mark, up to the quality standards, not producing the product according to the standard, quality assurance techniques, quality control technique, तो उसकी performance को appraisal करने का वक्त आ सकता है. The checklist, whether the job has been done or not, checklist को use किया जा सकता है. A certain type of employees like sales representative in the marketing department, salespeople, salesman, the business calculate the performance of these employees according to the number of sales made, according to the sales revenue generated. Number of customer complaints would be the another method. कुछ employees जिनकी customer complaints बहुत ज़्यादा, वो एक indicator हो सकता है. Customer feedback would be the indicator, and our next topic would be, that would be the third topic of this chapter, management by objective. So all these methods which are used by, these are the methods which are used by HR department to calculate the performance. इस सारे परफॉर्मेंस को शो किधर किया जाएगा, इसके लिए एएस का एक टॉपिक आपको रिवाइज करना पड़ेगा. Performance appraisal, as you know, the method which are used by the business to evaluate the employee performance at the end of every year. A business organization produces a document which is called ACR, Annual Confidential Report. That is an appraisal report that shows employee performance on yearly basis. That should be a confidential. एक employee की दूसरी employee को show नहीं की जाती, but उसको show की जाती है और उसके number of points या जो भी grading या जो भी scoring का method business ने develop किया, इस मेथड्स बाय यूजिंग दीज मेथड जो हमने पढ़े हैं, या जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया, आप ये मेथड खुद से डिज़ाइन कर सकते हैं. इन मेथड्स को यूज़ करते हुए आप एक परफॉर्मेंस अप्रेजल आपको लिखना होगा एट द एंड ऑफ द ईयर. इस परफॉर्मेंस अप्रेजल पे डिसाइड किया जाएगा, दैट द परफॉर्मेंस अप्रेजल डिसाइड्स द प्रमोशन, the increase in financial reward, in other words called increment, and other financial rewards are offered according to the performance appraisal. So there are certain methods used by the HR department to increase the employee performance. Frequent methods which are used by human resource along with the functional department. आप कह सकते हैं HR department क्या production या marketing के साथ काम करेगा या इंडिविजुअली काम, along with the functional, उनके साथ मिलके काम करेगा. और पहले तो इंडिकेट किया जाएगा कि एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस कहाँ पे पुअर है, और जहाँ पे पुअर
कैलकुलेट इवेलुएट होगी, उसके बाद डिफरेंट मेथड्स को अडॉप्ट किया जाएगा टू improve employee performance. No other method can be as effective as training. Training providing the on the job with the with working with the most experienced people, or off the job attending seminars, training centers, training workshops. This is the most effective method of improving staff performance and the behavior. And the training would also be used to make employees more flexible, more productive, multi-talented, able to perform the variety of tasks more effectively, more efficiently. And also it could lead to good motivation. जितना employee अच्छा perform करेगा, उसकी अपनी self motivation भी create होगी. Technology, the second one, the most important, the technology, high quality machines and equipment, modern equipments like mechanization, like automation, computers control machines and equipments are more efficient as compared to old-fashioned previous equipment, which are not as green as productive, but the modern machines are more productive as compared to old-fashioned mass production machines and equipments. The next would be increasing the financial rewards. एचआर डिपार्टमेंट को फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स के लिए अकाउंटिंग फाइनेंस डिपार्टमेंट के साथ काम करना होगा. ये मेथड स्पेशली उस वक्त यूज़ होगा जब परफॉर्मेंस को ये देखा जाएगा कि वाई द मोटिवेशन लेवल एंड द परफॉर्मेंस लेवल इज़ नॉट गुड विद इन द ऑर्गेनाइजेशन. कई ऑर्गेनाइजेशन उसमें एक ब्रांच में परफॉर्मेंस ठीक है, एक ब्रांच में परफॉर्मेंस, या पूरी ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर शो कर रहा है एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस के जो रिव्यूज़ हैं वो अच्छे नहीं. सो HR department needs to revise the financial policy. Corporate culture को आपको change करना पड़ेगा, जिसमें financial rewards को देखना पड़ेगा, bonuses को, working conditions को, fringe benefits को आपको देखना पड़ेगा कि क्या रीजंस हैं. इसके लिए एक मेथड यूज़ किया जाता है जो कि बड़ा सिंपल है. वो ये मेथड है कि जो एम्प्लॉय जब आपकी ऑर्गेनाइजेशन से छोड़ के जाते हैं तो वो रीजंस को आप जस्टिफाई करें कि क्या रीज़न है, क्यों लेबर टर्नओवर. अगर एक एम्प्लॉय आपकी फर्म को छोड़ के भी गया तो बिहाइंड द स्क्रीन क्या रीज़न है. वो कोई फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स की वजह से छोड़ के गया है, वो कोई प्रमोशन अपॉर्चुनिटीज़ की वजह से लीव का, वो कोई कॉर्पोरेट कल्चर का कोई इशू है, वो वर्कलोड का कोई इशू है. Appraisal, yes, assessing the effectiveness and performance. It is the process done by the HR department to calculate the performance every after a year, and the main purpose of appraising is to improve the weak areas. Employee को assess करने का main मकसद यही है कि जो उसके weak areas हैं उनको calculate किया जाए और उनको at the end of the year उनको improve किया जाए. How we can improve? Again, training और on the job of the job उसका एक आंसर होगा. Quality circle हमारे पास नेक्स्ट होगा, जिसमें टीम वर्किंग में एम्प्लॉयज़ को काम किया जाता है. एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए सजेस्ट किया जाता है कि उसमें टीम वर्किंग को भी ऐड किया जाए. क्वालिटी सर्कल्स, दीज आर द ग्रुप ऑफ पीपल हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आइडेंटिफाइंग द क्वालिटी रिलेटेड प्रॉब्लम्स विद इन द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. This is the part of Kaizen approach, which is introduced by Japanese. The main purpose of quality circle is to identify the problems within the firm, presenting, finding and presenting the solutions in front of the managers. This is the way to improve the quality of product and production process, marketing, accounting, and HR as well. Quality circle is a way to encourage people to work hard, to increase performance, to motivate them. So this is all about employee performance, the methods to calculate the employee performance, and the way how to improve the employee performance.
So this is all about today's lecture. If you want to ask any question, you can have the question and answer session in at which you can ask the questions if you have any kind of question related with employee performance, and you can ask. Thank you.